So, how multicellular organisms obtain their food? Here, we take an example of human digestive system. There are mainly two parts of the human digestive system. The first one is the alimentary canal, and the second one is the accessory digestive glands. Alimentary canal is a long tube-like structure which starts from mouth to the anus. And the accessory digestive gland, that means the glands which help in a digestion process, is called as the accessory digestive glands. In alimentary canal, various organs are present like mouth, buccal cavity, esophagus, stomach, small intestine, large intestine and anus. So this much organs are present in an alimentary canal, whereas there are only three types of the accessory digestive glands: the salivary gland, liver and pancreas. Here you can see the structure of the human digestive system, which start from the mouth, then various organs and at last anus. Okay, so let's start the alimentary canal. Okay, first of all, alimentary canal. So in alimentary canal, various organs are there. First organ, mouth. What is the function and what is the importance of mouth in an alimentary canal? So the food is ingested through mouth. Food is ingested through mouth. Now this mouth leads to a buccal cavity. Now buccal cavity has three various structure. Which one? The first one is teeth. The second one is the salivary gland, which is a one type of accessory digestive gland. That means salivary gland, and third one is tongue. So these three parts are present in a buccal cavity. Now what is the function of these three? Okay, first teeth. Teeth they crush the food particle into a smaller piece. Okay, then salivary gland it secretes the saliva. Now what is the function of saliva? It wet the food. वो हमारे फूड को वेट कंडीशन में रखता है एंड जो स्वैलेंट प्रोसेस होती है तो उसको इजी बनाता है. ओके, नाउ वन मोर एक important point in salivary gland. This salivary, first of all, salivary gland secretes the saliva. Inside this saliva contain an enzyme called as amylase. Saliva contain an enzyme called as the salivary amylase. So what is the function of this salivary amylase? Salivary amylase can digest the starch. It digests the starch into maltose. So that means the digestion process begins from buccal cavity. Okay. Now the third part, that means tongue. What is the function of tongue? Tongue can properly mix the saliva and food. Okay. Now, so the mouth and buccal cavities are over. Now, buccal cavity leads to a long tube-like structure called as a esophagus. So, what is the function of esophagus? Esophagus. First of all, esophagus is a long tube-like structure. This esophagus push the food from buccal cavity to the stomach. Push the food from buccal cavity to stomach. Okay. Now that smaller piece of food comes in stomach. That means esophagus leads to a stomach. Stomach is the main and large organ of human digestive system. It is a main and large human digestive system.
stomach secretes the three types of the juice, and before that, when food comes in a contact with stomach, then inside the stomach, inside the wall of the stomach, gastric gland is present. Gastric gland is present on the wall of the stomach. So when food comes in a contact with this stomach, the gastric gland release some type of juice. That juice is called as a gastric juice. Now there are mainly three types of the gastric juice. The first one is HCl, hydrochloric acid. Second one is a pepsin, is one type of enzyme. And the third gastric juice is a mucus. So there are mainly three types of the gastric juice which release from the gastric gland when the food comes in a contact with stomach. Now what is the function of this HCl, pepsin and mucus? Okay, so first of all start from the HCl. The name indicates hydrochloric acid. That means this HCl creates an acidic condition in our stomach. Okay. Second function, it kills the bacteria. जो फूड के थ्रू हमारे बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गए हैं, बैक्टीरियाज आ गए हैं, उनको किल करने में भी हेल्प करता है. ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल इट क्रिएट अ एसिडिक मीडियम इन आवर स्टमक. Second, it kills the microorganism in our stomach. Then second, pepsin. What is the function of pepsin? With the help of pepsin, the proteins can digest. Pepsin क्या करता है? वो प्रोटीन को प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है. Then last, what is the function of mucus? Mucus, it associate on an inner wall of the stomach. ये जो स्टमक है तो स्टमक की जो इनर वॉल होती है ये, तो ये इनर वॉल पे दिस म्यूकस एसोसिएट हो जाता है, जिससे क्या होता है HCl और पेप्सिन की जो हार्मफुल इफेक्ट स्टमक को लगती है और स्टमक इसकी हार्मफुल HCl और पेप्सिन की हार्मफुल इफेक्ट से डैमेज होने से बचता है. ओके. सो एक मेन हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का एक मेन ऑर्गन जो स्टमक कहलाता है. ओके. प्लस हियर ये डाइजेस्टिव जूस, गैस्ट्रिक जूस, दैट मींस गैस्ट्रिक जूस एंड फूड वो चर्निंग प्रोसेस होती रहती है. ओके. 4 से 5 घंटे तक यहाँ पे चर्निंग प्रोसेस होती है. सो जिससे जो छोटे छोटे पार्टिकल्स में जो फूड एंटर हुआ था, नाउ दे कन्वर्ट इनटू अ सेमी सॉलिड पेस्ट. दैट मींस यहाँ पे पार्शियली डाइजेशन होता है. स्टमक क्रिएट्स द पार्शियली डाइजेस्टिव फूड एंड दिस पार्शियली डाइजेस्टिव फूड, दैट मींस सेमी सॉलिड पेस्ट, इज कॉल्ड एज काइम. उसको काइम बोलते हैं. Okay. Now, stomach leads to a small intestine. That means the partially digested food now enter in a small intestine. Okay. So, when food comes in small intestine, okay, small intestine is also release the juice. That juice is called as a intestinal juice. Okay. Plus the two other accessory digestive glands like liver and pancreas are also associated with the small intestine. कैसे? So liver, start from the liver. Liver, this liver secretes the bile juice. It secretes the bile salt or. Now what is the function of this bile?
दिस बाइल फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर अल्कलाइन इन नेचर। सो जो एसिडिक कंडीशन में हमारा फूड था, स्टमक में एसिडिक कंडीशन क्रिएट हुआ विद कैसे, तो HCl के प्रेजेंस से। ओके, तो वो एसिडिक फूड जब भी बाइल के कांटेक्ट में आता है तो वो फूड अल्कलाइन, मतलब इसकी एसिडिक जो कंडीशन होती है वो कम हो जाती है। So first of all, bile is an alkaline in nature. Now what is the function of bile? It emulsifies the fat. मतलब emulsification process होती है। Emulsification process means what? Fat convert into a small particle. That small particle is also called as a droplets. So the conversion of fat into a small particle, this process is called as the emulsification. So this emulsification process is done by a bile salt or bile juice. Okay, then the second one is a pancreas. What is the function and importance of pancreas? Pancreas secretes the juice called as a pancreatic juice. Pancreas secretes the juice called as a pancreatic juice. Now, this pancreatic juice contains amylase. Which amylase? Pancreatic amylase. That's salivary amylase अलग सा है. Okay, and this amylase वो भी अलग सा है. ये amylase को बोलते हैं pancreatic amylase. This pancreatic amylase is responsible or help in a digestion of carbohydrate. Okay, the second pancreatic juice, that is trypsin. Trypsin can help the digestion of protein, whereas the third pancreatic juice is a lipase. So lipase can help in the digestion of lipid. So these three pancreatic juice are present in pancreatic juice. That means ये pancreatic juice कहाँ से रिलीज होते हैं? Pancreas से रिलीज होते हैं. So these two, the bile from the liver and pancreatic juice from the pancreas, ये दो भी कहाँ पे मिक्स होंगे? In small intestine. Okay, plus small intestine से भी रिलीज होता है intestinal juice. So what is the function of that intestinal juice? Okay, here in a small intestine the complete digestion is occur. स्टमक में हमने पढ़ा था पार्शियली डाइजेस्टेड फूड का पार्शियली डाइजेशन होगा, कंप्लीटली डाइजेशन नहीं होगा. सो वो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जिसको हम काइम बोलते हैं वो कहाँ पे है? स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा. ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल, लीवर से निकला हुआ बाइल प्लस द पैंक्रियाटिक जूस वहाँ भी मिक्स होंगे. वो दोनों का फंक्शन देखा. द इमल्सिफिकेशन प्रोसेस डन बाय द बाइल, प्लस द पैंक्रियाटिक जूस वो क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं. प्लस इंटेस्टाइन से इंटेस्टिनल जूस भी रिलीज होता है. सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दैट इंटेस्टिनल जूस? द इंटेस्टिनल जूस कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करता है इन ग्लूकोज, प्रोटीन को कन्वर्ट करता है इन अमाइनो एसिड एंड लिपिड को ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है. दैट मीन्स द कंप्लीट डाइजेशन अकर इन स्मॉल इंटेस्टाइन. ओके, सो इट
may be asked in exam, the digestion process start from the buccal cavity. किसका डाइजेशन होता है? स्टार्च का डाइजेशन होता है. किसमें होता है? माल्टोज में. एंड द कंप्लीट डाइजेशन इज अकर इन स्मॉल इंटेस्टाइन. कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पे हो जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन पे हो जाता है. So that means the digestion process is over. Now the absorption. These digestive food are now absorbed. So in this absorption कौन सा organ help करता है? Small intestine. Inside the wall of small intestine, inside, for example, this is a small intestine. Here, inside the wall of small intestine, a finger-like projection, a finger-like structure called as villi. So, inside the wall of small intestine, there is a finger-like projection called as a villi is present. So what is the function of villi? So जो फूड डाइजेस्ट हुआ है तो वो डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब कौन कर लेगा? विलाई. सो जितने विलाई ज्यादा होते हैं उतना ही स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सरफेस होता है वो ज्यादा होता है. एंड जितना सरफेस ज्यादा उतना एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी ज्यादा होती है. ओके. सो inside the wall of small intestine there is a finger like projection called as a villi. This villi absorb the digestive food. Plus these villi also contain a numerous blood vessels. इसके साथ blood vessels भी जुड़े हुए होते हैं. So वो digested food को absorb करता है और वहाँ से बॉडी के हर एक सेल को वो जो digestive food है वो पहुँचाता है. Okay. Now small intestine leads to a large intestine. What is the main function of large intestine? So due to this process, some foods जो थोड़ा बहुत फूड है वो undigested रह जाता है. So that undigested food comes in large intestine. Large intestine is also called as the colon. It is also called as colon. So undigested food now comes in large intestine. So what is the function of large intestine? Large intestine absorb the watery part of undigested food. जो undigested food के अंदर जो watery part होता है पानी उसको absorb कर लेता है large intestine. So that undigested food converts into a solid portion. This solid part of undigested food is called as a stool or इसको feces भी बोलते हैं, waste material. Okay, so that stool or feces material now regularly वो हमारे बॉडी से रिमूव होता जाता है with the help of anus. एनस के जो मसल्स होते हैं वो रेगुलरली टाइम टू टाइम कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और जो वेस्ट मटेरियल होता है वो उसको हमारे बॉडी से रिमूव करता है. सो ये हुआ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. सो इन दिस वे ह्यूमंस, दैट मीन्स अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ऑब्टेन देयर फूड. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. थैंक यू.